A very good morning to my dear students of class 6. Today we are going to continue our chapter 6 integer and we are going to start exercise 6.3. Okay, in exercise 6.3 we will subtract the integers. Okay, now first question is fine and the very first question we have given 35 minus 20. Okay, as I have already told you about the rules, and rule said that माइनस एंड ब्रैकेट में अगर पॉजिटिव है, जिन नंबर्स के आगे कोई भी साइन नहीं होता, वी कंसीडर इट एज पॉजिटिव इंटीजर. सो -20 will become -20. When bracket will open, you will write it as -20. So it will become 35 minus 20 and the answer is 35 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get 15. As you know 35 is greater, तो साइन किसका आएगा? plus 15. Now the second question is 72 minus 90. Okay, this is same like first part, so you can solve it by yourself. Okay, now move to C part. C part, minus 15 minus minus 18. Okay, as you know, if minus and minus is there, so minus minus will become plus 18. It will become minus minus will become plus. Okay, so it will become minus 15 plus 18 and the answer is, you know very well that if we have one positive and one negative, so what we do? We do subtraction. So 18 minus 15 is 3 and it will be positive because 18 is greater and 18 is plus sign. Okay, now move to D part, and the D part said that minus 20 minus 13. Now you know minus 20 and minus 13 both are negative, so we add it and minus 20 and minus 13 become minus 33. Okay, now the E part is 23 minus minus 12. Now again 23 minus minus will become plus, so we get the answer and the answer is 35. 23 plus 12, 35. Okay, now F part is minus 32 minus minus 40. That is like C part, बिल्कुल C part के जैसे है. So you will solve it by yourself. Okay, so the part C and part the part B and part F you will solve by yourself. Now we will move to question number 2, that is fill in the blanks with greater sign, less sign or equal sign. Question number 2 is fill in the blanks. I told you. So we need to check that what sign will come here. So first is minus 3 plus minus 6 and minus 3 minus minus 6. Let's understand this. As you can see that minus 3 plus minus 6, so it will become minus 3 minus 6. दोनों negative है, so both will be added. दोनों को हम add कर लेंगे, so we get minus 9 here. Second वाले में minus 3 minus minus 6, so minus minus will become plus 6, so it will become minus 3 plus 6, so we get plus 3 here. 6 minus 3, 3 और बड़े का साइन आएगा, it means plus 3. So as you know minus 9 and 3 में से which is greater? Plus 3 is greater because positive numbers are always greater than all negative numbers. सारे negative number से positive number greater होते हैं. Even अगर यहाँ पे 0 भी होता तो 0 is also greater than minus 9. Okay, 0 भी अपना negative integer से बड़ा होता है. So what sign will be there? So here we get the sign and the answer is we will put the mark of greater than sign. और greater number कौन सा आया है हमारे पास? 3 is greater. So minus 3 plus minus 6 जो हमारा first वाला वो है, this is less than minus 3 minus minus 6. Okay, hope this much is clear to you. Now move to question number part B. जो भी हमारी ये fill-ups है, first we need to solve it. पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि विच साइन विल कम, कौन सा साइन वहाँ पे आएगा. सो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व इट. ओके, सो हियर वी नो प्लस 3 इज ग्रेटर, सो वी पुट द ग्रेटर साइन हियर. 3 के लिए 3 के साइड आप ग्रेटर का साइन करेंगे और यू कैन से कि minus 9 इज लेस देन 3. ओके, ओके, नाउ वी हैव द बी पार्ट. नाउ इन बी पार्ट वी हैव minus 21 minus minus 10 and blank minus 31 plus minus 11. Let's solve it. So B part we have minus 21 minus minus 10 and minus 31 plus minus 11. We solve minus 21 plus 10 minus minus will become plus, minus 31 minus 11. So what we get here, as you can see that we are getting
-21 प्लस 10, इट विल बिकम 21 में से 10 माइनस करेंगे आप, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर, वी गेट 11, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा इट मीन्स माइनस का साइन आएगा. बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, -31 -11, सो वी गेट, दोनों को ऐड कर देंगे एंड वी गेट -42 हियर. ओके, नाउ बोथ नंबर आर नेगेटिव, दोनों नंबर ही नेगेटिव हैं, -11 एंड -42. सो -11 एंड -42 अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो आपको पता है नंबर लाइन में आप ड्रॉ करेंगे तो -11 पहले आएगा एंड -42 बाद में आएगा, और जितना हम लेफ़्ट में जाते रहते हैं उतना वो नंबर स्मॉल होते रहते हैं. तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है. सो -11 ये ग्रेटर होगा -42 से. ओके, सो -21 -10 इज़ ग्रेटर देन -31 प्लस -11. Okay, now we have the C part here, and that is 45 minus 11 dash, यहाँ पे fill करना है आपको साइन, 57 plus -4. So again we are going to solve it, 45 minus plus 11, 57 plus -4. So we get 45 plus 11 equal to 56, and 57 minus 4 is equal to 53. So as you know, this is greater, 56 is greater than 53. So 56 is greater than 53. It means 45 minus 11 is greater than 57 plus -4. Okay. So this is the answer. Now we will solve D part, and in D part we have -25 minus -42 and -42 minus -25. Okay. So वी नीड टू टेक केयर ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है और ब्रैकेट के जो रूल समझाए थे उसके अकॉर्डिंग खोलना है. सो -25 माइनस प्लस 42, -42 एंड माइनस प्लस 25. सो हियर यू कैन चेक दैट 1 इज़ माइनस एंड 1 इज़ प्लस. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 से 25 माइनस होगा, वी गेट +17 हियर. हियर वी व्हाट वी डू, -42 प्लस 25, 42 इज़ ग्रेटर बट माइनस का 42 है, सो वी गेट -17 हियर. क्लियरली यू नो कि पॉजिटिव इंटीजर आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, सो दिस विल बी ग्रेटर. +17 इज ग्रेटर देन -17. ओके, सो वी हैव द रिजल्ट, -25 minus -42 is greater than 42 minus -25. Okay, right. Now we are going to start question number 3, and that is fill in the blanks. We need to fill the blanks and we have 5 parts. So first part is -8 में मैं क्या प्लस करूँ कि it will become 0, 13 में क्या प्लस करूँ कि it will become 0, 12 में अगर -12 करें तो क्या आंसर आएगा, -4 में क्या ऐड करूँ कि -12 बन जाए, एंड -15 किससे करूँ कि 10 आ जाए. सो कीप दिस थिंग माई, -8 में अगर मैं +8 कर दूँ इसका अपोजिट, सो इट विल बिकम 0. सिमिलरली 13 में अगर मैं -13 कर दूँ, सो इट विल बिकम 0. 12 - 12 विल बी 0 इज़ द आंसर. नाउ इन द डी पार्ट वी नीड टू चेक. डी पार्ट में -4 में मैं क्या ऐड करूँ कि इट विल बिकम -12. सो एज यू नो 8 and 4 is 12. सो दोनों इंटीजर नेगेटिव होंगे, सो आंसर विल बी -8. सो -8 इज़ द आंसर. नाउ इन ई पार्ट व्हाट आई नीड टू डू कि -15 से क्या माइनस करूँ कि -10 आंसर आए. सो -15 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ तो आई विल गेट -10. Okay, now we are going to start question number 4. Find -7 -8 -25. Now we need to take care of brackets very carefully. So it will become -7 -8 and minus plus 25. Okay. So now we are going to solve this. First we are going to add minus these integer. So what we get here, -15. तो -15 एंड +25. अब एक माइनस है एक प्लस है, सो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वी गेट 10 आंसर. 25 - 15 10, सो +10 इज आंसर. बी पार्ट इज -13 + 32 -8 -1. ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 नेगेटिव नंबर्स आ गए और एक पॉजिटिव आ गया. चाहे आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, चाहे आप इसे 1 by 1 सॉल्व कीजिए. ओके, सो वी गेट इफ़ वी चेक इट लाइक दिस, सो वी गेट -13 एंड 32 का ऑपरेशन अगर पहले इनको सॉल्व करते हैं तो 32 - 13 वी गेट +19 हियर, एंड अगेन 19 - 8 इज़ 11, 11 - 1 इज़ 10. वन मोर थिंग, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक 32 एंड -8 -1
एंड -13, सारे माइनस वाले इंटीजर को हम एक साथ रख देते हैं. सो व्हाट वी गेट 32 माइनस, इनको ऐड कर दें अगर 8 11 19, 8 and 1 9, 9 and 3 22. So we get minus 22. So we get the answer plus 10. So this is also the second method we can solve it. Okay, you can use both method. In video I am showing you this method. Assignment में आपको मैं दूसरा method send कर दूँगी. Okay. Okay, now move to C part. C part is -7 plus -8 plus -90. As you can check, all numbers are negative numbers. डायरेक्टली आप तीनों को ऐड करके आंसर लिख सकते हैं. तीनों माइनस हैं तो आंसर विल बी ऑल्सो इन माइनस. 90 प्लस 8 प्लस 7, इन सबको ऐड करके इनका सम निकालेंगे एंड आंसर विल बी इन माइनस. और आंसर आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा. सो वी गेट हियर माइनस. और आप 2 स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं कि -7 प्लस -8 दोनों ऐड हो गए -15, देन -90 से ऐड कर लिया. दिस इज योर चॉइस. ओके, सो वी गेट -105 एज द सम. नाउ द डी पार्ट 50 -40 -40 -2. ओके, अगेन ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है. आप चेक कर सकते हैं माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस. सो वी गेट 50 प्लस 40 प्लस 2. एज यू नो दैट माइनस माइनस विल बी माइनस. सो वी गेट the sum as 90 plus 2 92. Okay. Okay class, hope 6.3 is clear to you all. Thank you so much.